different types of sounds produced by the heart, and these sounds are produced due to closing of AV valves and semilunar valves. So different sounds produced by the heart due to closing of AV valves means auriculoventricular valves and semilunar valves. There are two AV valves, tricuspid and bicuspid. There are two semilunar valves, that is aortic semilunar valve and pulmonary semilunar valve. So there are totally 4 valves involved here. When these valves they get closed, sounds are produced. So let's see what kind of sounds are produced. The first sound produced is lub. First sound produced is lub. And this lub sound is produced due to closing of AV valves. Lub sound is produced due to closing of AV valves. Just at the beginning of ventricular systole. तो साउंड कब प्रोड्यूस होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से जस्ट पहले एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे and it produces the sound lub. Second most important thing about this lub, ये जो sound lub है, it is louder. इसका आवाज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, louder, and the duration, lub sound duration, इसका duration जो है 0.16 seconds है. So I hope it is clear. Lub is produced due to closing of AV valves. So this is the first sound. Now this second sound, that is dub. This second sound, that is dub, it is produced due to closing of semilunar valves. Produced due to closing of semilunar valves. That is aortic semilunar and pulmonary semilunar. Just at the beginning of ventricular diastole, यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने से थोड़े पहले एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, दैट इज सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे and the sound produced is dub. Second, this dub is lesser. इसका साउंड जोर नहीं है, कम है, and the duration for dub is 0.10 seconds. 0.10 seconds है. So this is the second sound. Let's see the third sound.
The third sound is produced, remember, by the vibration created by ventricles. Produced due to vibrations created by ventricles during ventricular filling. So when blood rushes into the ventricle from atria, remember, that time you can hear this third type of sound. Second, this sound can be heard only in young, healthy people. Can be heard only in young and healthy people. Young और healthy people में मिलेगा, तो simply I can write one thing. This third sound is produced during ventricular filling. Third sound is produced during ventricular filling. So this is the third sound. Now let's see the fourth sound. Now the fourth sound is an abnormal sound. It's an abnormal sound and produced when the atrial systolic pressure is high. Means from the atria, when blood flows into the ventricle, remember that time when the pressure is high, fourth type of sound is produced. Now let's see defects. Now one common defect is heart murmur. One common defect is heart murmur. Now what is this heart murmur? It is an abnormal sound produced when blood leaks through valves. When blood leaks थ्रू valve, जब valve से blood लीक होगा तो तब एक साउंड आता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट मर्मर. Now I am writing this upside here, there is no place down. Now the reason for this heart murmur is the reason for heart murmur is rheumatic heart. इसका रीजन कौन है? rheumatic heart. Now the question comes, what is this rheumatic heart? Remember, streptococcus infection to mitral valve. Mitral valve is also known as bicuspid valve. तो जब streptococcus बैक्टीरिया
मिट्रल वाल्व को इन्फेक्ट करेगा तो ब्लड उस वाल्व से लीक होगा और उसे बीमारी का नाम है रूमेटिक हार्ट, और इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हार्ट मर्मर। सो दिस इज व्हाट अबाउट हार्ट साउंड। एंड वन थिंग, द हार्ट साउंड can be heard by an instrument called stethoscope। स्टेथोस्कोप से इसको हम उस हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हार्ट साउंड एंड इट्स डिफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। अगर आप सच में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। लाइक करने के लिए आपको 1 सेकेंड लगता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। कमेंट कीजिए, ठीक है, अच्छा है या बुरा है वीडियो, या और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर बताइए मुझे, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।